Yeah, good morning, Shiv, Aditya, Rutuja, Jai Shri, Rohit. Good morning. I hope the audio and visuals are fine. Beta, just give me a thumbs up in the chat box that all the audio visuals are perfectly fine so that we can continue from the topic which I left yesterday. Yeah, Veer Doshi, good morning. Good morning. Just give me a thumbs up in the chat box so that it's like the audio, video, visibility is there, right? Yeah, okay, perfect, perfect, perfect. Aditya, Sailesh, okay, perfect. Chalo. Chalo, let's start with the session, guys. Yes, let's start with the session from where we left yesterday. So we were talking about the third week of development, guys, and that week it is referred to as the week of gastrulation. Why? Because all the three germ layers जो आप लोग सुनते आ रहे हो ectoderm, endoderm and mesoderm will be formed. Now, guys, in the chat box, just tell me which layer is like formed first. It is an MCQ question that has been asked in the exam multiple number of times. So I just want to know, yeah, just tell me, guys, which germ layer will be formed first. Yes, yes, Chetna, very good. It is the endoderm which will be formed first. Bilal, good morning. Rutuja, endoderm. What is the second germ layer to be formed? What is the second germ layer to be formed? Okay, which is the second germ layer that is formed? Yeah, everyone is right. It is the endoderm. Yeah, but which is the second germ layer that is formed? Now, what I've drawn yesterday, let us. Yes, it is the mesoderm, and lastly, it is the endoderm. Sorry, it is the ectoderm. Lastly, it is the ectoderm. So you guys are very well aware that in some books it has been written something else. So you will go by the latest update that first is the endoderm which is formed, then the mesoderm, and lastly the ectoderm is formed, right? And lastly the ectoderm is formed. Okay. So go by the latest update. Yes. Go by the latest update. Yes. Everyone is right. So obviously everyone know basically I'm just revising what we have discussed and just then we'll draw a diagram also and I will simply explain you what is like. Hmm. So we already know this is the embryonic plate, right? And we have this amnion and the secondary yolk sac. Okay. And what view I have taken? I have taken this particular view out. Okay. The two cells. Okay. The first cell you already know it is the epiplastic cells, right? The epiplastic cells are there. The epiplastic cells are there. And we have, what is the structure, this nodular mass called as, guys? What is this which I have marked with A? It is called as. Okay, what is this? What that is marked with A? It is called as. And we have the, yeah, primitive streak over here. So, can anyone tell me? Yes, Tanvi, it is the primitive knot. Very good, bache. It is the primitive knot, guys. It is the primitive knot. So, yes, Tanvi is right. It is the primitive knot. Okay. Now, this will come into the picture now. You already know this is the primitive streak. This is the primitive streak, right? And below we have the hypoblast, right? Below we have the hypoblast, and you already know some hypoblastic cells will be like tall columnar, and this is something which is referred as the procaudal plate. Procaudal plate, right? This is the procaudal plate. Yes, this is the procaudal plate. This is the procaudal plate, and yes. So till this, everyone was aware that of the primitive streak, okay, the primitive streak will move down and it will replace the entire hypoblastic cells and it will form the definitive endoderm. After that, it will again above it will form the mesoderm, and again on the top it will replace the epiblastic cells and will form the um, definitive ectoderm. Now, guys, what about the primitive knot? Now, what about the primitive knot, guys? Okay, beta Tamil speaker, procaudal plate and oropharyngeal membrane is same. I will be coming to this point, beta. Just wait for some couple of minutes. I will be coming to this particular point. Don't worry. Okay. Okay. Good. Good morning. Good morning, Kapil.
Please guys, any doubts, just let me finish, first complete the topic, then put your questions over there, right? क्या पता the things which I will be telling you right now वो ऐसे ही solve हो जाएगा, ठीक है? So kindly just stick to the screen first, right? Now, when all the three germ layers are formed, okay, we'll write it over here. Okay. So remember guys, when all the three germ layers are formed, when all the three germ layers are formed, okay, who is forming all the three germ layers? The primitive streak, okay. Now remember guys, the primitive knot, अब ये primitive knot की बात कर रहा हूं मैं, this primitive knot, now this primitive knot, okay, will also proliferate. Can anyone tell me the other name of the primitive knot? I have not mentioned it yesterday. Anyone who would like to tell me the other name of the primitive knot? Let's see who gives the answer first. Primitive knot will also proliferate. It will also proliferate. Okay. And these cells will also go down and replace mesoderm in the midline. And it will replace mesoderm in the midline. Yeah, it will replace the mesoderm in the midline and it will move forward. It moves forwards. Now, remember guys, when all the three germ layers are formed, okay, when all the three germ layers are formed, what will happen? This primitive knot will also move down. Now guys, tell me, a primitive knot, when it will move down, which layer it will encounter first? Yes, it will be the mesoderm, क्योंकि तीनों layers बन चुकी है. All the three layers are formed, right? Ectoderm भी बन गया, mesoderm भी बन गया, endoderm भी बन गया. Now this
Guys, is my voice audible to everyone now? हाँ, yes, yes आ गया. अब पहले दूसरा कर रहे थे. ठीक है. Okay, sorry for the delay, guys. It was like a technical error. I hope the voice is audible. The audio visuals are fine now from my end. Yes, what I was teaching. Now, guys, when all the three term layers are formed, what will happen, guys? Now, this primitive knot will move down and it will replace the mesoderm in the midline. Okay. Now, guys, mesoderm बन चुका है ना क्योंकि primitive streak में it has already formed the endoderm, the mesoderm, and the ectoderm. Now, guys, suppose this is the embryonic plate, guys. Embryonic plate is oval or circular in shape. I don't have anything oval or circular right now, so I'm just using this paper to demonstrate you guys that remember that the primitive, or sorry, the embryonic plate, it is oval in shape. Okay, and now we are looking at the embryonic plate from the top. Whatever picture I will draw right now, it is from the top, from the epiblast side. Okay, from the epiblast side, right? So this this is the embryonic plate, right? This is the embryonic plate, and I'm looking at the embryonic plate from the top. Now, what you will see, guys, from the top, you will see this primitive streak, okay? This primitive streak, and here we will have the primitive knot, right? This primitive streak and this primitive knot, right? Like this, you will see now. If I just draw it like this, it will be the primitive streak and the primitive knot, and it will go towards the procaudal plate. Procaudal plate पीछे होगा, ठीक है? तो procaudal plate में dotted बनाऊंगा, डॉटेड बनाऊंगा क्योंकि वो पीछे होगा. अभी हम ऊपर से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा? प्रिमिटिव स्ट्रीक दिखेगा, राइट? और प्रिमिटिव नॉट दिखेगा, एंड इट इज दिस प्रिमिटिव नॉट विल it will move, it will replace the what we say the mesoderm, and it will try to reach the procaudal plate, right? The head end or the head part, right? Procaudal plate जहां है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Head end. So I hope this is clear to everyone, right? So this will be the head end. So I hope guys this is clear to each and everyone. Just give me a thumbs up कि ये वाला portion समझ में आ गया कि हम लोग जो picture बनाने वाले हैं, it will look like what? Okay, it will look like what? Right? Sure. Okay. Now guys, suppose, let us draw this. Suppose this is the embryonic plate, guys. Now this is very important to understand, right? This is the embryonic plate, right? This is the embryonic plate and the view is from the top. बेटा एपीब्लास्ट की तरफ से देख रहे हैं. ये जो व्यू है ना बेटा, आपको ये पिक्चर्स ऐसी पिक्चर नहीं बनानी है. इसको समझो कि हमने किस व्यू में ये पिक्चर बनाई है, ठीक है? किस व्यू में ये स्कीमेटिक डायग्राम में व्यू इज फ्रॉम टॉप. हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से तो हमें क्या दिखेगा? प्रिमिटिव नॉट, प्रिमिटिव स्ट्रीक दिखेगा, प्रिमिटिव नॉट दिखेगा, है ना? प्रिमिटिव स्ट्रीक दिखेगा, प्रिमिटिव नॉट दिखेगा. तो व्यू इज फ्रॉम द टॉप. और टॉप की अगर मैं बात करूं तो एपीब्लास्ट वाला जो साइड है ना, वहां से देख रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो ये बेसिक पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए. ओके, व्यू इज फ्रॉम द टॉप. ओके, नाउ गाइस, remember that we have something which is called as the primitive streak, and primitive streak, at the end we have the primitive knot. So I'm just drawing the primitive knot, and we have something which is called as the primitive streak. Primitive streak, right? We have the primitive knot, and we have something which is called as the primitive knot. Okay? Now, ऑब्वियसली बात है ये एम्ब्रियोनिक प्लेट है, ठीक है? अब इस एम्ब्रियोनिक प्लेट को हम ऊपर से देख रहे हैं,
तो ऊपर से देख रहे हैं तो हमें प्रिमिटिव स्ट्रीक एक तरफ से जाती हुई नजर आएगी और यहाँ पे प्रिमिटिव नॉट होगा, ठीक है। और इस चीज को आई एम जस्ट शो यू लाइक दिस, जैसा हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आपको ये पता है दिस इज द टेल पार्ट, और प्रिमिटिव नॉट विल नाउ अप्रोच द हेड एंड ऑफ द एम्ब्रियो, प्रोकॉर्डल प्लेट की तरफ जाने लगेगा, ओके। एंड दिस प्रिमिटिव नॉट, ओके, primitive knot will go downwards and head end की तरफ याद रखिएगा बेटा क्या प्रेजेंट होता है, what is the structure which is present at the head end, जल्दी से बताओ फटाफट in the chat box, what is the structure that I have marked over here, it is present at the head end. Yes, fun mode, very good, it is the procaudal plate, yes, it is the procaudal plate. इट इज द प्रोकॉर्डल प्लेट। अब अगेन गाइस मैंने इसको डॉटेड बनाया है, डॉटेड ही बनाना क्योंकि वो नीचे की तरफ है, आपको ऊपर से देख रहे हो ना, और प्रोकॉर्डल प्लेट नीचे की तरफ है, राइट। तो यस, प्लीज ये पिक्चर माइंड में क्लियर रखना कि ये डॉटेड बनेगा, ये डॉटेड बनेगा, द रीजन इज कि आप ऊपर से देख रहे हो और प्रोकॉर्डल प्लेट नीचे है, ठीक है, प्रोकॉर्डल प्लेट नीचे की तरफ है। तो अब द प्रिमिटिव नॉट will proliferate in the midline, okay, it will in the midline and it will replace the entire mesoderm. Primitive knot जो है वो proliferate कर रहा है, this black color which I am drawing right now, it is replacing the entire mesoderm, okay, and what will happen, a cylindrical process will be formed, पहले एक cylindrical process बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक कैनाल बनेगी, तो इतना डिटेल में नहीं जाना, we don't have to go in that much detail, okay, a canal will be formed, उसको notochordal canal बोलते हैं, ठीक है। After that, this structure, okay, this structure which is formed over here, it is called as the notochord, it is called as the notochord. Now this is important, क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है। Now over here you just have to mention this guys, hmm. that the primitive knot will go downwards, और नीचे क्या है, मीसोटर्म है, ठीक है, तो इट विल रिप्लेस द मीसोटर्म इन द मिडलाइन, it will replace the mesoderm in the midline, right, and a cylindrical process will be formed, a cylindrical process, okay, then a canal is formed, a canal is formed that is called as the notochordal canal, we don't have to go in that much detail, then ultimately the notochord will be formed, then ultimately the notochord will be formed, okay, then ultimately the notochord will be formed. So notochord is extending to the head end of the embryo, okay. So remember that the notochord, it is, okay, from the primitive streak, like this notochord, it is extending to the head end of the embryo, okay. When I say head end of the embryo, it clearly means towards the procaudal plate, और procaudal plate याद रखना डॉटेड बनाना क्योंकि वो नीचे की तरफ है, procaudal plate. Okay, guys, just give me a thumbs up in the chat box if this particular concept and the picture is clear to everyone. If this particular concept and picture is clear to everyone, just give me a thumbs up in the chat box. ये वाला पॉइंट और ये डायग्राम थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। अनुष्का says yes, Aditya, Garima, very good बेटा। Everyone says that it's like perfectly okay. रोहित, तन्वी, एंजल, गाइस फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई क्या करो, मैंने पहले भी बोला है लेट मी बी एक्टिव थ्रू आउट, वरना लगेगा कि मैं इसे लाइव सेशंस का मतलब ये है ना, टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए, मैं ही गधों की तरह बोल रहा हूँ और आगे से तुम जवाब नहीं दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। यस, क्रिस्मा, तनु, जयश्री, राजकुमार, टिम्पल, आमिर, ओके ओके गाइस, परफेक्ट, फन मोड, यस। अब इसमें अब
ध्यान से देखते हैं अब। ओके, now guys, this procaudal plate, it is also called as the buccopharyngeal membrane. Buccopharyngeal membrane. Okay, and towards the tail end beta, we have one membrane, and that membrane it is called as the cloacal membrane. Okay, this from the primitive streak. Yeah, we have the cloacal membrane. अब बेटा हाँ हाँ अनुष्का, वो तो खैर टेक्निकल चीजें हैं, बट इट्स या जस्ट आई जस्ट ट्राई टू शो ऑन वन सिंगल 1D में दिखा रहा हूँ ना मैं वो। नाउ बेटा, क्लोइकल मेम्ब्रेन जो है आगे चल के आप लोगों का एनाल केनाल बनाती है, एनस ओपनिंग हो जाती है यहाँ पे, और बक्कोफेरेंजियल जो है आगे जाके ओरल कैविटी बनाती है, ओरल ओपनिंग बनती है। तो ऑब्वियसली बात है, दिमाग लगाना, ऊपर हेड की तरफ है तो माउथ की एक ओपनिंग हो गई और एक एनाल ओपनिंग हो गई, दैट विल बी फॉर्म फ्रॉम द क्लोइकल मेम्ब्रेन, राइट। Apart from that, guys, remember that from the yeah, and the rest area, beta, you already know we already have the mesoderm. अगर primitive तुम्हें वो दिख रहा है, so that we have the proliferative mesoderm all around. Now we have the this yellow color which I'm highlighting. This mesoderm will be present all around, except at the two ends. Okay, except at the two ends, right? This will be all around except at the two ends, and the two ends which I'm leaving, it is the cloacal membrane and the procaudal plate. Now, so I can say that procaudal plate and cloacal membrane, right? They both will they both are like derived from the ectoderm and the endoderm, but the mesoderm will be absent over here. The mesoderm will be absent over here, right? Now, there is a reason also, guys, why the mesoderm will be absent. The mesoderm will be absent at these two places. Now, this is the proliferating mesoderm that is I've shown in like yeah, that I've shown in the yellow color. This is the proliferating mesoderm. Okay, it is extending all over everywhere, but it is absent at two places. One is the procaudal plate and one is the cloacal membrane. Now, why it is absent, guys? See, now remember, guys, if the mesoderm is absent over here, so it is very much clear that the cloacal membrane, it will contain like only ectoderm and endoderm, and buccopharyngeal membrane will also be composed of the ectoderm and the endoderm. अब इसका रीजन भी है, देखो अब इसका रीजन भी है, लेट मी जस्ट गो इट टू यू नाउ गाइस। On the top, for example, suppose this is the ectoderm, right? And this is the endoderm. And in between, guys, in between, what we have the mesoderm, right? We have the mesoderm. We have the mesoderm in between, right? तो ये बीच में पूरा क्या है, mesoderm है. But the ectoderm and the endoderm are joined at two ends. Okay, they are joined at two ends. एक एंड तो क्या हो गया हमारा प्रोकॉर्डल प्लेट वाला, और एक एंड क्या हो गया क्लोइकल मेम्ब्रेन. मतलब इन दोनों जगह पर व्हाट इज एक्चुअली एब्सेंट, द मेसोडर्म इज एब्सेंट, राइट. और बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसमें पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट है, मेसोडर्म प्रेजेंट है. नाउ गाइस, अगेन दिस मेक्स अ सेंस कि यहाँ पे मेसोडर्म जो है प्रोकॉर्डल प्लेट या फिर एनाल ओपनिंग में इट इज एब्सेंट. The reason is, guys, why? Because these membrane has to rupture. Okay? अगर ये रप्चर होंगी तभी जाकर ओपनिंग ऑफ माउथ बनेगा और तभी जाकर एनाल कैनाल बनेगा. तो यस, अगर मीजोटर्म प्रेजेंट होता तो ये और ज्यादा थिक हो जाती, तो रप्चर होना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता. रप्चर विल बिकम मोर डिफिकल्ट देन, राइट.
So that is the reason the mesoderm is actually absent at the procaudal plate and the cloacal membrane. I hope this part is clear to everyone. Just give me a thumbs up, guys. So yes, yes, Tanvi. Okay, okay, better. Perfect. Angel Matthews, Manish, Kapil, very good. Very good. Anushka, very good. So everyone knows that this buccopharyngeal membrane will give rise to the opening of mouth. It gives rise to the opening of mouth, right? Opening of mouth, and the cloacal membrane in the cloacal membrane will actually give rise to opening of anus. Okay, will give rise to opening, or it will later on form the anal canal. So just write like this, anal canal. Okay. Basically, what will happen? The ectoderm and the endoderm will rupture and opening will be there. अगर mesoderm होगी तो thick हो जाएगा. So that's the basic funda over here, right? That's the basic funda over here that you have to remember. Okay. Now, is this part clear? Is this diagram clear? All the concept is clear? Yes. अब थोड़ी बात अब हम करेंगे नोटोकॉर्ड के बारे में. So we'll just talk about the notochord, but before that, let us just understand, guys, one important thing. Now this notochord, guys, now again I'll take the help of these two papers, right? I'll take the help of these two papers. You already know we have the notochord. Now what this notochord will do? Notochord ये जो क्या कहते हैं what we say mesoderm में था, okay? Now what it will do? ऊपर की तरफ क्या है? ये ऊपर क्या है? एक्टोडर्म है. नीचे क्या है? ये एंडोडर्म है. ठीक है? और नोटोकॉर्ड के बीच में मेसोडर्म में है. Now this notochord will actually stimulate the ectoderm on the top. Okay? ये stimulate करेगा ectoderm on the top, और ये ectoderm will now convert it into neuroectoderm. Okay, it will now come be giving rise to like neuroectoderm. So write down before the remnants of the notochord. Just make two statements over here. Now, firstly, you should write the function of the notochord. Remember. Yes, Raj Soni, just a moment. Wait, let me complete the notochord. The function of notochord is to stimulate the surface ectoderm and convert it into neuroectoderm. Neuroectoderm. Okay. Now, neuroectoderm, you already know, will give rise to a multiple number of structures. So we'll discuss in detail. But what is the fate of the notochord? It's not only just has to stimulate the above lying ectoderm. इसके कुछ remnants भी हैं जो आपको देखने को मिलते हैं. The very first remnant of notochord that you can see, it is nucleus pulposus. अब जिन लोगों ने मुझसे एनाटॉमी पढ़ी हुई है और ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन भी था, न्यूक्लियस पल्पोसस कहाँ देखने को मिलता है? फटाफट से बताइए. नोटोकॉर्ड का ही रेमिनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस पल्पोसस. जल्दी से जवाब दो, फटाफट से जवाब दो. व्हाट इज न्यूक्लियस पल्पोसस, गाइस? यस, वर्टिब्रा नहीं है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है. फन मोड तन्वी, वेरी गुड. इट इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. नाउ न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है? एक्चुअली यू ऑलरेडी नो. छोटा सा लिख लेंगे बेटा, ज्यादा तो नहीं लिख पाऊंगा, बट थोड़ा बहुत जिनको नई आइडिया पता होना चाहिए. दैट इज देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू वर्टिब्रास. ओके, so remember it is a fibro cartilage. Okay, it is a fibro cartilage. It is a fibro cartilaginous structure. Fibro cartilage. Okay, so this intervertebral disc contains two things.
It contains two things. The outer circular part, it is called as the annulus. Annulus का मतलब ही क्या होता है बेटा? Circular होता है. Annulus fibrosus. और बीच में you will contain a jelly like material. बीच में we will have a jelly like material, and that jelly like material, it is called as the nucleus pulposus. Nucleus pulposus. So this jelly like material, it is a nucleus pulposus. Yes, nucleus pulposus, and it is the central part of the intervertebral disc, right? It is the central part of the intervertebral disc, and that so that is the where the nucleus pulposus is coming from. It is the just a remnant of the notochord. I hope this is clear. The other remnants of notochord, beta, you have to remember. The second point that you have to like remember, yeah, the apical ligament of the dens. Apical ligament of dens. इससे पहले मुझे ये बता दो, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है बॉडी में? सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है बॉडी में? फटाफट से नंबर लिख दो चैट बॉक्स में जल्दी से. फर्स्ट ईयर वाले, सर्वाइकल वर्टिब्रा पता है नेक रीजन में प्रेजेंट होती है. तो यस, व्हाट इज द नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा? यस, इट इज द 7. यस यस, 7 7. चलो, तनु, नितिका, डिंपल, चेतना, कृष्णा, गरिमा, वेरी गुड. मनीष, वेरी गुड. सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है, तन्वी 7. हाँ ठीक. ओके. नाउ especially if we talk about the second cervical vertebra. ठीक है, ये एटिपिकल वर्टिब्रा होता है ना, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा में भी टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं. टिपिकल मतलब सारे फीचर्स सेम होंगे, और कुछ जो फीचर्स अलग होते हैं ना, उनकी वजह से उनको एटिपिकल वर्टिब्रा बोलते हैं. तो सेकंड वर्टिब्रा जो होता है, ठीक है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या नाम देते हैं बेटा? फटाफट से बता दो. सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, व्हाट इट इज कॉल्ड? सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम लोग क्या नाम देते हैं? फटाफट से बता दो चैट बॉक्स में. यस, रविंद्र पूछे, अनकला, वेरी गुड. यस यस गाइस, एक्सेस. एक्सेस, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ ठीक ठीक. तो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, ओके, इज हैविंग अ डेंस. मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से एक डेंस होता है. अगर किसी ने मेरा नेक का लेक्चर सुना हुआ है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये इस तरीके से डेंस होता है, ठीक है, एंड इट हैज अ लिगामेंट अटैच्ड टू इट. और इसी पर एपिकल पार्ट पे, एपिकल का मतलब होता है ऊपर, एपिकल मींस ऑन द टॉप. तो इसी एपिकल पार्ट पर एक लिगामेंट होता है, एंड दैट लिगामेंट इट इज अ रेमिनेंट ऑफ द नोटोकॉर्ड. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एपिकल लिगामेंट ऑफ द डेंस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एपिकल लिगामेंट ऑफ द डेंस, राइट? हाँ, ओडोंटॉइक प्रोसेस है. वेरी गुड अनुष्का. चल. हाँ, ओडोंटॉइक प्रोसेस, डेंस पार्ट, या. नाउ द थर्ड and the important like one of the remnants of the notochord that you have to remember, it is the membrana tectoria. Membrana tectoria, or it is also called as the tectorial membrane. It is also called as the tectorial membrane. Okay. Now guys, in the upper part of the vertebral column, basically a membrane is present, okay, and that is called as the tectorial membrane. तो जब भी हम लोग vertebral structures पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे. So upper part of the vertebral column में membrane present होती है, that is called as the tectorial membrane. So yes, till now I hope everything is clear. The remnants of the notochords are clear. Okay, the remnants of the notochord are clear. चलिए एक थम्स अप दे दीजिए फटाफट से. ये जो भी हमने डिस्कस किया है, ये तीनों स्लाइड्स आपको क्लियर हो गई हैं. देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. यस, तनुप्रिया, यस. आदित्य, यस. एंजल मैथ्यूस, यस. तन्वी, वेरी गुड, वेरी गुड. Yes, Anushka, Jayashree, Tanu, Dimple, very good, perfect. Sai, Divyashree, very good, very good. Guys, please reply करते रहा करो so that it keeps me alive during the lecture. वरना मैं भी सो जाऊंगा. Okay, okay. Surveen, Aditya, Nitika, very good. Now, I am going to show you something now. That is the transfer section from the level of notochord. Okay, transfer section from the level of the notochord. Now, guys, let us just first. I want to tell you from where I'm taking this transverse section or the cross section. So remember, guys. So you already know
we have this embryonic plate which is like oval in shape, right? This embryonic plate which is like अंडे जैसा है ये, ठीक है? It is like oval in shape. Now this embryonic plate will contain this cloacal membrane, right? We have the primitive streak, right? And we have the primitive knot. Okay, we have the primitive knot over here. Then we have the notochord, and at last we have the, yeah, buccopharyngeal membrane or the cocaudal plate. Now this is the notochord, right? This is the notochord. ये notochord हो गया. Now I'm taking a cross section from the level of this notochord. अब यहाँ से मैं काट के देखूंगा कि मुझे क्या दिखाई देगा, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग काट के देखेंगे कि what I will see from here, right? Now guys, when I see guys, जो सबसे बाहर वाली लेयर है बेटा, ध्यान से देखना, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, okay, that will be the ectoderm. Okay, now this notochord has already stimulated the surface ectoderm, okay, and it will form a groove like structure. Okay, it will form a groove like structure. Okay, now this is what, yes, this is the ectoderm. This is the ectoderm. Let me draw all the three layers, then it will be like more easy for you to understand. Okay, then below we have the, below we have the endoderm. We have the endoderm, and in between you guys will encounter a layer that is shown as this mesoderm. Okay, इसमें पूरा का पूरा ये mesoderm है. तो इसी mesoderm में, yes, so let me just complete it. This yellow colored portion, it is called as the mesoderm. So let me just mark it for, this is the mesoderm. Mesoderm. Okay, and over here we will find something which is called as the notochord. नोटोकॉट ऑब्वियसली, अब जो ये ट्यूब है अब वो हमें बिल्कुल ऐसे कटी हुई नजर आएगी ना, बिल्कुल सिर्फ एक डॉट की तरह ही नजर आएगा ट्रांसफर सेक्शन में. वी हैव दिस कॉर्ड दैट इज कॉल्ड एज द नोटोकॉर्ड, राइट? Now, as this notochord like stimulates the ectoderm, it will form a groove over here, and this groove, बेटा ये जो sac like structure तुम लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं neural groove. Okay, this is called as the neural groove. Okay, ये जो sulcus, linear sulcus जो आपको देखने को मिलता है, that is called as the neural groove. Okay, और साथ में आपको ये दो folds दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं neural folds. Okay, these are called as the neural folds. Okay, so this notochord will try to stimulate the ectoderm, and automatically a neural groove will be created along with the two folds that you can see. Okay, and on the margin of the neural fold, guys, at the margin of the neural fold, we have a specialized, okay, we have a specialized cells. Okay, we have specialized population of cells which are present on this crest, I mean the margin of this neural folds over here. And remember, yes, this is actually called as the neural crest cells, right? This is called as the neural crest cells. ये दोनों मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होगा, मतलब दोनों न्यूरल फोल्ड्स के ऊपर प्रेजेंट होगा. ओके, एट द मार्जिन्स ऑफ द न्यूरल फोल्ड यू विल एक्चुअली एनकाउंटर अ ग्रुप ऑफ or a population of cells, and these cells are called as the neural crest cells. Okay,
So yes, they are present on the crest. That's why it's called as the neural crest cells. Okay. Now what will happen, guys? What will happen? Now again, moving with the same image, what will happen? These neural crest cells will detach themselves from the ectoderm. वो ectoderm से बिल्कुल अलग हो जाएंगी and they will come to the side of the notochord. Okay, they will come to the side of the notochord, right? Now, sorry, they will come to the side of the neural tube. They will come to the side of this neural tube. How the neural tube will form? Just see over here. Now, guys, what will happen? Just see over here. You already know this is something like this. This is something like this. Okay. Now, what will happen? This is the neural groove that you can see over here. Yes, this is the neural groove, and at sides we have this neural folds. Now, this neural groove will detach themselves. These folds will join with each other, and this tube-like structure will detach from it. Okay, and this tube-like structure will detach. Okay, and it will. Okay, so now let's just draw this and see how it goes on. Okay, now what will happen? These two folds will come closer to each other. Okay, they will come closer to each other, right? And they will join, and a small pouch, it will go inside into the mesoderm. So yes, to make this more easy, let us just focus over here. So yes, what will happen? These two folds will join with each other. For example, if I just wanted to show you, now these are the neural folds, right? These are the neural folds. Now they will join with each other और फिर एक sac like structure बनेगा जो नीचे, what will happen, guys? What will happen to it? That this pouch like structure, ये जो pouch like structure है ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा. Okay, and this is something will now be called as the neural tube. Okay, it will be now called as the neural tube. न्यूरल ट्यूब एंड ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या प्रेजेंट होगा वी हैव जो मैंने ब्लू से बनाया था दैट इज द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स दैट इज द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स न्यूरल क्रेस्ट सेल्स तो यस ऑब्वियसली बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी यू कैन सी या you can see the notochord over here notochord I've drawn with black color I'll just use same color code notochord will be there and obviously the lining endoderm will be present over here lining endoderm will be present and automatically everywhere will be the mesodermal part mesodermal part. I hope this particular picture is clear to each and everyone, guys. Just give me a thumbs up that if you understood how the neural tube is folded. So just revising it कि जो notochord थी, it will stimulate the surface ectoderm and it will create a pouch-like structure, or it can see a linear sulcus, a groove that is called as the neural groove, which is actually giving rise to the two neural folds, right? Two neural folds. और उनके ऊपर at the margin of the neural fold, at the crest of the neural folds, basically some cells, group of population of cells are present. These are called as the neural crest cells. And along with this pouch, they will move down. And now this particular groove is now turned into neural tube. As soon as these folds will meet with each other, what will happen? A neural tube will be created, and these cells will like migrate from that crest to at the sides of the neural tube, right? I hope this is perfectly clear to everyone now. ऑब्वियसली बात है तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ न्यूरल ट्यूब है तो ये पूरा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ये सब ओरिजिनेट करेगी बट न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो है ये पूरी की पूरी सिंपैथेटिक चेन को इट इज गिविंग ओरिजिन ओके सम अप करा दो बेटा तो सम अप में अभी तक तो मैंने यही बताया था देखो
कब से बोल रहे हो सम अप कराने के लिए पूरा स्टार्टिंग? हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया था एट द लेवल ऑफ द नोटोकॉट, ओके। और प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है इट विल, जो अबव एक्टोडर्म है उसको वो स्टिमुलेट करेगी, इट विल फॉर्म अ ब्लाइंड पाउच लाइक sulcus, that's the neural groove. Automatically the neural folds will be there, उनके ऊपर population होती है, that is the neural crest cells. So as the folds will come closer to each other, the neural cells will automatically migrate, okay, and it will lie along the neural tube और वो बिल्कुल pouch बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है. The simplest one which I can. Okay. Now, guys, can anyone tell me what is it? What is sacrococcygeal teratoma? Can anyone tell me what is sacrococcygeal teratoma? Now, guys, write down. Now, okay. Now we have a developmental tumor. And remember that developmental tumor, it is the sacrococcygeal tumor, okay, or sacrococcygeal teratoma, I would say. It is the sacrococcygeal teratoma. Now, how this is actually now it is due to persistence of the caudal end of the primitive streak. Okay, it is due to the persistence of the caudal end of the primitive tube or primitive streak. Okay, and it can be invaded by the neural crest cells and can give rise to sacrococcygeal. सैक्रम हो गया ना, नीचे की तरफ देखो क्या होता है, सैक्रम और कॉकेक्स होता है ना इधर, sacrococcygeal teratoma. Yeah, sacrococcygeal teratoma. नाउ गाइस व्हाट इज हैपनिंग, हाँ रुक जाइए, ठीक है, न्यूरल जो क्रेस्ट सेल्स है दे विल माइग्रेट टू दिस साइड, ओके. नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू कि it is, if the primitive streak, okay, the primitive streak anyway has to disappear after some time. If the persistence at the caudal end is there, now what will happen, the neural crest cells will migrate to that particular part, and then it will give rise to the sacrococcygeal teratoma. So it is because of the persistence of the caudal end, right? And it is invaded by it, that's resulting in the tumor. Okay. But the main problem here is the persistent part, right? So neural crest cells की वजह से tumor नहीं हो रहा, it is the, yeah, migration to this particular site which will actually lead to this particular tumor, right? So if it is like there. So I hope this is clear to everyone. Yeah. चलिए मीसोडर्म की बात कर लेते हैं, मीसोडर्म की अगर बात कर लेते हैं, चलिए let's talk about the mesoderm, guys. Now, guys, you already know we have something which is called as, now this layer is called as the ectoderm, right? Underlying layer, we already have this particular part that is called as the mesoderm, right? We have
the mesoderm. Sorry, mesoderm liquid. This endoderm. Just a moment. This is the endoderm, and in between, you already know we have the mesoderm, right? We have the mesoderm. So yes, before the mesoderm, just let us draw the notochord. Notochord is still there, right? This notochord, which we were talking about. Yes, this is the notochord. Notochord is there, right? Now, along the notochord, yes, yes. Along the notochord, basically the differentiation of the mesoderm will take place. And remember, guys, that along the notochord, there will be like, okay, this part you already know that it is the mesoderm, right? This is the mesoderm. See? So this is the mesoderm, right? Okay. अब इसी notochord के साथ, okay, what you will encounter, guys, there is formation of differentiation of the mesoderm just along the notochord, okay, then again a small portion, and then a very big portion of the notochord, right? Very big portion. Both sides it will be like same. So the mesoderm is typically divided into one, two, and three parts, right? The mesoderm is typically dividing into these parts or differentiating into these parts. I'll just draw it a little big. Yes. And point of reference is the notochord here. Notochord here. So remember, guys, the one which is lying around the notochord, okay, around the axis, okay, that is called as the para-axial mesoderm. That is called as the para-axial mesoderm. Again, it makes sense, guys. Axial का मतलब क्या है? बिल्कुल मिड वाला पॉइंट, ठीक है? एक्सियल स्केलेटन होता है ना, बिल्कुल मिड वाला. तो पैरा मतलब उसके साथ वाला. ओके, द वन, नंबर वन, बिल्कुल साथ साथ जो है, पैरा एक्सियल मीजोडर्म, राइट? पैरा एक्सियल मीजोडर्म. अमित चौधरी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर द सेम पर्सन. तुम भी पढ़ाई करते हो क्या? चलो, द सेकेंड वन, okay, the second one that is lying in between, so this is called as the intermediate mesoderm. Intermediate mesoderm. And the third one, beta, third one क्या है? देखो मिड लाइन ये है, मिड लाइन ये है, तो ये लेटरल साइड पे है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? दैट इज कॉल्ड एज द लेटरल प्लेट mesoderm. It is called as the lateral plate mesoderm. It is called as the lateral plate mesoderm. तो फटाफट से एक थम्स अप दे दो गाइस इन द चैट बॉक्स की एटलीस्ट ये डिफरेंशिएशन समझ आ गया है कि जो नोटोकॉर्ड के साथ होगा, जो मिडलाइन के साथ होगा वो एक्सियल मेसोडर्म, बीच वाला इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और तीसरा वाला जो बिल्कुल लेटरल साइड पे, दैट विल बी द लेटरल मेसोडर्म. दैट विल बी द लेटरल मेसोडर्म. यस. यस, तनुप्रिया, तन्वी, अलीशा, एंजल, मैथ्यूज, वेरी गुड गाइस. फन मूड, निकिंदर रेड्डी, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, ठीक है. अनुष्का, यस, वेरी गुड. ये हो गया. नाउ जस्ट
एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे. विल डिस्कस इट लाइक वन बाय वन, डोंट वरी, विल डिस्कस इट वन बाय वन. एक एक मीजोडर्म को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो भी अभी नेसेसरी पॉइंट्स हैं. So remember guys, the lateral plate mesoderm, again I will take it और मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा. तो पहले हम लोग पैराएक्सियल से शुरू करते हैं. ओके, नाउ व्हेन आई से पैराएक्सियल mesoderm, बेटा it simply means parallel to axis. Parallel to axis, right? It simply means parallel to axis, parallel to the neural tube. Okay, parallel to the neural tube, right? Okay, parallel to the neural tube over here. And remember guys, yes, okay, sorry, again I have to just correct this particular diagram. तो यहाँ पे ये याद रखना, it is the neural tube guys. Notochord होगा, but it will be like I will show you where it is. It is just below this neural tube. तो यहाँ पे आपके थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो. It is the neural notochord just below the neural tube. Neural tube. So yes, I just forgot to mention the notochord over here. You can just insert it over here. Okay. So notochord भी it's just like coming down और उसके नीचे आपको notochord दिखेगा. ठीक है. Neural tube it is just coming like this. और न्यूरल ट्यूब के साथ कौन सी सेल्स देखने को मिलेंगी? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस. आई हैव जस्ट फॉरगॉट टू ड्रॉ दैट सेल्स इन दिस डायग्राम. इफ यू कैन, या, upper is the neural tube, yeah, the lower one is the notochord. And which cells will surround the neural tube guys? I have not drawn in this picture. Yes, Tanupriya, very good. It is the neural crest cells. Yes. So over here beta we will have, like I'm just, ये तो न्यूरल ट्यूब हो गया. तो इसके साथ जो सेल्स देखने को मिलेंगे दैट विल बी द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. लाइक फिलहाल अभी इसका कोई काम नहीं है तो इसलिए मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया था. हाँ, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीवन इज राइट. नाउ गाइस, पेरा एक्सियल मेसोडर्म. ओके, नाउ तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले करते हैं पेरा एक्सियल मेसोडर्म. Para-axial mesoderm. Yes, everyone is right. Para-axial mesoderm. Now, beta, this para-axial mesoderm will give rise to structures which are called as somites. Now, what are somites, guys? This is again important. What are somites? Now, what will happen? That there will be some ball-like condensations formed. Okay, and these ball-like condensations, okay, that are called as somites. Okay, in this particular mesoderm, for example, let us now discuss about somites. Now for example बेटा देखो, डायग्राम से देखो, डायग्राम से समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, you already know neural tube is a tube, right? For example, this is the neural tube that I am drawing right now. Now this is the, I'm just writing it over here, NT. NT basically stands for the neural tube. आप लोग पूरा पूरा लेबल करिएगा प्लीज. इट इज द न्यूरल ट्यूब. इट इज द न्यूरल ट्यूब. नाउ न्यूरल ट्यूब के साथ क्या प्रेजेंट है? दैट इज द पैरा एक्सियल मेसोडर्म. ओके, पैरा एक्सियल मेसोडर्म प्रेजेंट है. नाउ दिस पैरा एक्सियल मेसोडर्म इज प्रेजेंट अलोंग द साइड्स ऑफ द न्यूरल ट्यूब. तभी हम उसको पैरा एक्सियल बोल रहे हैं. मतलब एक्सियल मतलब बॉडी के मिडलाइन के बिल्कुल साथ में, पैरा मतलब साथ में. So now this para-axial mesoderm will have certain ball-like structures. Okay, अब इसमें क्या present होगा? There will be some ball-like structures, right? And these ball-like condensations, okay, these ball-like condensations are called as somites, and they will develop on the either side, right? They will develop on both sides. So there will be like ball-like condensations that will develop in this, that is called as the para-axial mesoderm. So this is actually the para-axial mesoderm. We are discussing the para-axial mesoderm, and this para-axial mesoderm, okay, some ball-like condensations will be formed, and these will be called as the somites. These will be called as the somites. Okay. Now there is something which is called as the somite period. That is again an MCQ for the entrance exam, right? So that is something called as the somite period. इस पे डॉलर लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट. तो सोमाइट पीरियड, और ये सोमाइट पीरियड होता है बेटा डे 20 till डे 30. डे 20 till डे 30 बेसिकली दीज सोमाइट्स आर बीइंग फॉर्म. सो इसलिए हम इसको सोमाइट पीरियड बोलते हैं.
Okay, these are called as the somite period. I hope this particular part is clear, guys. फटाफट से एक thumbs up दे दो that this part is clear, everyone. चलिए बताइए फटाफट से, ये क्लियर हो गया सबको? तनुप्रिया सेज यस, तो माइंड्स ये पता चल गया है। ठीक है, चल ओके। तन्वी, गरिमा, वेरी गुड। नितिका, एंजल, वेरी गुड, वेरी गुड। Now guys, remember that initially 42 to 44 pairs of somites are present. ऑब्वियसली बात है, पेयर्स ही होंगे, दोनों साइड पे होंगे, तो ये पेयर्स हो गए, राइट? Pairs of somites are formed. Now 42 to 44, how the differentiation goes on? Basically beta, we have something which is called as the occipital somites. Occipital somites, cervical somites, thoracic somites, lumbar somites, sacral somites, and we have coccygeal somites. So we have occipital somites, cervical somites, thoracic somites, lumbar somites, sacral somites, and ultimately we have the coccygeal somites. Okay. Occipital somites are 4 in number, cervical 8 initially, 12, then lumbar 5, sacral 5, and coccygeal are 8 to 10. So that's how the number goes from 42 to 44 in number, right? So initially when the somites are formed, they are approximately 42 to 44 in number. But later on, what will happen, guys? Now, some somites will disappear. Okay, some disappears from the above region. Okay, from the occipital somites, right? Some will disappear from here and some will disappear from here. बीच वाले जो होते हैं ना somites, they will be fixed. They will be fixed, right? Some will disappear from above, upper and the lower. Okay, some will disappear from the upper part and some will disappear from the lower part. So if the question says what is the number of the definitive somites, so remember the definitive somites are basically around 36 to 37 to 38, and you have to go, if with one answer, then it is 37, the best answer. It is 37, the best answer. Okay, so yes, now I have to discuss the structure of the somite. ये सब लिख लिया आप लोगों ने? Everyone has written this, I suppose. I hope you all are writing the notes along with me. You are drawing all the beautiful diagrams that I'm drawing with you people, so that it's pretty clear that notes लिखते रहिए. All the important question PYQs are already there in the notes. जितना भी important बता रहा हूँ सब कुछ है notes में. सारे diagrams बनाते रहो. I'm not making you write thesis. I'm just drawing simple diagrams, line diagrams, so that it's easy for you to understand. जितना picture देखोगे उतना mind में clarification होता है. रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा. अब इट्स वेरी मच एसेंशियल कि आप लोग क्लिनिकल पढ़ना स्टार्ट करें. मतलब अभी भी जैसे मैंने अभी कॉकिशियल टेराटोमा बताया, अभी मैं जीआईटी स्टार्ट करूंगा. एवरी क्लिनिकल पॉइंट आई विल डिस्कस. अब बेसिक्स नहीं आते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता. कहाँ से इनिशिएट हुआ, अगर वो पॉइंट नहीं आता है तो फिर बाकी फिर रट्टाफाई हो जाएगा ना, फिर रटना पड़ जाएगा. तो इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. इसलिए स्टार्टिंग से जनरल कराई है. वरना जीआईटी एम्ब्रियोलॉजी भी कर सकता था, बट फिर वो तुम्हें पता नहीं चलता कि मिडगट कहाँ से आ रहा है, हिंडगट कहाँ से आ रहा है. तो अब मैं बोलूंगा योग सैक से आ रहा है, तो आप लोग को योग सैक की पिक्चर है आपके माइंड में. योग सैक कैसे बनाए, सेकेंडरी योग सैक, राइट? तो इट्स वे इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस लर्न फ्रॉम द स्क्रैच. बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आगे पढ़ने का फायदा होता है, राइट? तो अगर सोमाइट का स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर सोमाइट का स्ट्रक्चर देखा जाए बेटा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सोमाइट.
अब मैंने एक सोमाइट निकाल के बाहर ले लिया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी. नाउ दिस सोमाइट इज बेसिकली डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स. Has two parts, like divided into two parts. One part it is called as the sclerotome. One part it is called as the sclerotome, right? And the other part is called as the derma or dermomyotome. Dermomyotome. Okay, we have the sclerotome and we have the dermomyotome. So the highlighted portion it is the dermomyotome, and the other one it is the sclerotome. Right? We have the dermomyotome, and the other one it is the sclerotome. Now, now guys, this sclerotome will again divide into. Okay, it also has two parts. You don't have to go in that much detail. We have the ventral sclerotome and we have the dorsal sclerotome. Obviously, बात है जो आगे की तरफ है, which is in front, it is the ventral sclerotome, and the one which is at the back, it is called as the dorsal sclerotome. Now, this sclerotome, you just have to remember this. This is again an important question from the exam point of view. Dollar लगा लो. It will give rise to. It will give rise to axial skeleton. Axial skeleton. Obviously बेटा इसको रट्टाफाई करने की जरूरत नहीं है. अब खुद देखो, न्यूरल ट्यूब है बीच में, बॉडी का सेंटर मान लो, ठीक है. अब बॉडी के सेंटर के साथ वाला मीजोडर्म है. बॉडी के सेंटर के साथ आपको क्या एक्चुअली देखने को मिल रहा है? ऑब्वियस सी बात है, एक्सियल स्केलेटन देखने को मिल रहा है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वही इट इज सराउंडिंग दैट. तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सियल स्केलेटन कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है. और एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आती है? रिब्स, वर्टिब्रा, राइट. एंड प्लस इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम, इट इज एन्युलस फाइब्रोसिस. और ये मैंने अभी आप लोग को बताया, इट इज पार्ट ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर डिस्कशन किया था. इट इज पार्ट ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. रट्टा नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगा लो बस, तो इट विल बी वे इजी फॉर यू टू लर्न. ठीक है. तो स्क्लेरोटोम जो है, ठीक है, स्क्लेरोटोम क्या है? सोमाइट है, सोमाइट का पार्ट है. सोमाइट कहाँ पे है? कि हाँ, न्यूरल ट्यूब के साथ है, तो मतलब कहीं ना कहीं बॉडी के बीच में है. ऑब्वियसली बात है, बॉडी के बीच में कौन सी बोन्स आती है? रिब्स आ गई, वर्टिब्रा आ गई, और यस, so obviously that is all these are arising from the sclerotome part. इतना क्लियर हो गया सबको? चल. Now, dermomyotome. Dermomyotome, guys. Now, again it contains two words in this, right? Now, it again contains two words in this. So we have the dermatome and we have the myotome. Okay, we have the dermatome and we have the myotome. And remember, dermatome, okay, will give rise to the dermis, the skin of the back. बेटा एम्ब्रियो इस तरीके से बन रहा है, राइट? So we have the head end, we have the tail end, और पीछे वाला जो part है, the skin of the back, it is basically from the dermatome, okay, of the somite, dermomyotome. So it gives rise to the dermis of the back, dermis of the back, right? It gives rise to the dermis of the back. The myotome, guys, the myotome will give rise to, it gives rise to two important things that you have to mention in your notes. The one, it is the back muscles, I would say, back muscles. मायोटोम हो गया ना, मसल्स हो गया. और स्पेशली अगर बैक मसल्स की बात करो, तो आपने एक मसल सुनी होगी, इरेक्टर स्पाइने. ओके, जो बैक मसल्स है, स्पेशली द इरेक्टर स्पाइने मसल्स, that will be like from the myotome. Okay, and we have back muscles, basically that is the
एपीएक्सियल मायोटोम, एपीएक्सियल मायोटोम, तो वो बाहर वाली लेयर हो गई। एक अंदर वाली ये वाली जो लेयर हो जाती है, ये जो आपका चेस्ट है और ये सब जो है, तो दैट इज। और अंदर वाले में ध्यान रखिएगा, वी हैव द हाइपोएक्सियल मायोटोम, myotome, and remember it will give rise to rest other skeletal muscles, rest other skeletal muscles। ऑब्वियसली बात है, पीछे वाली जो मसल है, बैक वाली जो मसल है, बैक वाली जो मसल है, इट इज अराइजिंग फ्रॉम द मायोटोम और उसको एपीएक्सियल मायोटोम बोलते हैं। और एक मायोटोम आगे की तरफ है, आगे की तरफ है, तो आगे कौन कौन सी मसल्स होंगी बेटा? एक तो लिम्ब मसल्स हो गई, ठीक है, अपर लिम्ब की मसल्स हो गई, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और ये जो एब्डोमिनल मसल्स है, ये सारी की सारी जो है, इट विल बी अराइजिंग फ्रॉम द हाइपोएक्सियल मायोटोम। तो ये जो लिम्ब मसल्स हो गई, okay, we have the intercostal muscles and we have the abdominal muscles, so all the muscles, okay, from this part, hypo वाला part ऐसे ही डेवलपमेंट हो रही है ना, हेड एंड ऐसे और टेल एंड ऐसे, पीछे वाला पार्ट एपी हो गया, आगे वाला हाइपो हो गया, एब्डोमिनल मसल्स एक्सेट्रा। So I hope this particular part is clear to each and everyone। क्या ये पार्ट सबको समझ में आ गया? फटाफट से एक थम्स अप दे दो दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। तो ये वाला सोमाइट वाला पार्ट जो पैराएक्सियल मेसोडर्म है वो क्लियर हो गया। चलिए तन्वी, वेरी गुड, आई होप एवरीवन इज लाइक, या सुरवीन, तन्वी, नितिका, निकेंद्र रेड्डी, गरिमा, कृति, मनीष, वेरी गुड गाइस। आई प्लीज बी विद मी थ्रू आउट द लेक्चर। या तनुप्रिया, वेरी गुड गाइस, परफेक्ट, ऋतुजा, परफेक्ट परफेक्ट गाइस, यस। चलो, अब हमने क्या डिस्कस कर लिया अभी? अभी हमने डिस्कस कर लिया पैराएक्सियल मेसोडर्म, जिससे सोमाइट्स निकलते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज द लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ओके, थोड़ा सा लेटरल प्लेट के बारे में डिस्कशन, इंटरमीडिएट मेसोडर्म में आपको उसमें पढ़ाऊंगा, क्या कहते हैं, जब जेनाइटल रिच वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग लेटरल प्लेट मेसोडर्म डिस्कस करेंगे। नाउ पुट द हेडिंग आफ्टर लेटरल प्लेट मेसोडर्म गाइस, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। नाउ now guys, you already know Ravinder, okay, Anushka, okay. We have the outermost layer that is called as the ectoderm. Okay. We have the innermost layer, guys, that is called as the endoderm, right? Endoderm. And remember, guys, what will happen in this mesoderm now, if it especially talking about the lateral plate mesoderm? What will happen, guys, that there will be a coelom which will be created by this mesoderm. I mean, an embryonic coelom will be created, right? Embryonic coelom. So that is intra-embryonic coelom. अब ध्यान से देखो बेटा, ये एम्ब्रियो के अंदर सीलोम बन रहा है, एक कैविटी अंदर बन रही है, द मेसोडर्म इज डिफरेंशिएटिंग, और एक सीलोम बन रहा है अंदर, ऑब्वियस सी बात है। सो दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट इज आउटसाइड द एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो के अंदर बन रहा है, दैट इज द इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ओके, नाउ गाइस, due to the presence of this intra-embryonic coelom, the lateral plate mesoderm will divide. Now, how it will divide, guys? See, one mesoderm which is lying towards the body wall. अब ये पूरा का पूरा mesoderm ही है, but one which is lying towards the body wall, the ectoderm, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? जो बॉडी वॉल की तरफ होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं गाइस? टेल मी। लेटरल प्लेट मेसोडर्म ही होगा, बट जो बॉडी वॉल की तरफ है
तो बॉडी वॉल के लिए एक स्पेशल नेम यूज करते हैं। जस्ट गिव मी दैट नेम गाइस, द चैट बॉक्स। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लो, ये हमने पहले भी वर्ड यूज किया है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के लिए भी यूज किया था, हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के लिए भी यूज किया था। तो आई जस्ट वांटेड टू नो इफ यू गाइस आर लाइक पेइंग अटेंशन, तो अभी ये तुम लोग को पता हो जाना चाहिए। हम्म। यस, इट इज द सोमैटोप्लूरिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म। यस, ये सोमैटोप्लूरिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म होगा। और द मेसोडर्म विच इज लाइनिंग टुवर्ड्स द बॉडी कैविटी, एंडोडर्म मतलब एंडोडर्म अंदर की तरफ हो गया ना। हाँ, सोमैटोप्लूरिक चेतना, यस इट इज द सोमैटोप्लूरिक वन। और जो मेसोडर्म अंदर की तरफ हो गया, जो बॉडी वॉल की तरफ हो गया, तो रिमेंबर इट विल बी, यस, this mesoderm guys, it will be, you already know it is somatopleuric. Okay, it is somatopleuric lateral plate mesoderm. It is somatopleuric lateral plate mesoderm. Yes, fun mode, very good. अब तो सबको आंसर आ ही गया है, तो yes, this is plankno, okay, this is planknopleuric lateral plate mesoderm, lateral plate mesoderm. Again guys, this makes sense, the name makes sense. Plankno means क्या होता है, विसरा। विसरा का मतलब क्या हो गया, ऑर्गन्स। तो एंडोडर्म की तरफ होगा ना, बिल्कुल अंदर की तरफ। और एक्टोडर्म मतलब क्या हो गया, बॉडी वॉल। सोमा, सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी वॉल। तो ये सोमैटोप्लूरिक हो गया, सोमैटोप्लूरिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म, सोमैटोप्लूरिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म, राइट। नाउ अब डेरिवेटिव्स देख लेते हैं फटाफट से। तो रिमेंबर गाइस, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम गाइस, इट विल गिव राइज टू। अब आप खुद बताइए कौन कौन सी कैविटीज देखने को मिलती है, रटने की जरूरत नहीं है। अंदर की तरफ कौन कौन से ऑर्गन्स है, हार्ट है, पेरिटोनियम है, मतलब सॉरी, हार्ट है, पेरिटोनियम है, लंग्स है। इनकी जो कैविटीज होती है, दैट इज ऑल, so that will be arising from the intraembryonic cellome only. So I can simply say the pleural cavity, the pericardial cavity, pericardial cavity, and the peritoneal cavity. It will all arise from this intraembryonic cellome. It will all, अंदर जो cavities बन रही हैं बेटा, वो सारी की सारी obviously बात है, इसी सीलोम से आएंगी, इसी सीलोम से आएंगे, राइट, इसी सीलोम से आएंगे। तो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू रिमेंबर, और रट्टा फाई करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाइए और दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ सोमैटोप्लूरिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अब अब ध्यान से देखो, सोमैटो का मतलब है बॉडी वॉल की तरफ, तो ये बाहर वाले कुछ स्ट्रक्चर्स को राइज देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बाहर वाली क्या होती है, पेरिकार्डियम होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इट विल गिव राइज टू पेराइटल प्लूरा। फटाफट से बता दो प्लूरा क्या होता है, व्हाट इज प्लूरा गाइस। किसकी लाइनिंग को प्लूरा बोलते हैं, फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बता दो, व्हाट इज प्लूरा गाइस। पेरिकार्डियल, ओके, एंड पेरिटोनियम। हाँ, ठीक है, पेराइटल बाहर वाली प्लूरा जो हो गई, कवरिंग द लंग्स, यस। अब यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ध्यान से देखो बेटा, डर्मिस जो स्किन की बैक थी, वो तो आप लोगों ने पढ़ लिया। स्किन ऑफ द बैक, इट इज बेसिकली गेटिंग राइज फ्रॉम वेयर, डर्मोमायोटोम, सोमाइट से हो गया। अब आगे की जो स्किन होती है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, दैट विल बी फ्रॉम दिस सोमैटोप्लूरिक, ओके, डर्मिस। सोमैटो मतलब बॉडी वॉल हो गई ना, तो आगे की स्किन किससे आएगी, सोमैटो, ठीक है। तो अगेन नो नीड टू रटिफाई, रिमेंबर इट इज द डर्मिस ऑफ द फ्रंट एंड लिम्स। बैक वाली किससे आई थी, डर्मोमायोटोम से, डर्माटोम से, ठीक है, डर्माटोम से, राइट, या।
हाँ रविंदर, वो पता है ना, पेराइटल प्लूरा होता है, विसरल प्लूरा होता है। तो पेराइटल मतलब बाहर वाली हो गई, ठीक है, और सोमैटो का मतलब भी क्या होता है, बॉडी वॉल की तरफ वाली जो चीज है, ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट। तो पेराइटल प्लूरा, पेरिकार्डियल और फिर पेरिटोनियल, ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट विल बी फ्रॉम दिस। और तीसरा आप लोग को याद रखना है, इट विल ऑल्सो फॉर्म द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी आप लोगों को पता था कि एक्सियल स्केलेटन कौन बना रहा है, पैराएक्सियल मेसोडर्म वाला पार्ट। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये जो आपका अपर लिम्ब हो गया, ठीक है, लोअर लिम्ब हो गया, ऑब्वियस सी बात है, लेटरल प्लेट बॉडी के लेटरल साइड पे है ना, बॉडी के लेटरल साइड पे, सो इट विल फॉर्म द अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ओके, इट विल फॉर्म द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए जो हमने सोमैटोप्लूरिक, लेटरल प्लेट, मेसोडर्म के बारे में लिखा है? तन्वी, नितिका, वेरी गुड गाइस। अनीश, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। बाकी सब भी रिप्लाई कर दिया करो, तनुप्रिया, डिम्पल, दी, ऋतुजा, वेरी गुड गाइस, फटाफट रिप्लाई कर दिया करो, क्योंकि अभी कंसेप्ट इतने हैं तो क्वेश्चंस में कम पूछ रहा हूँ, बट या इट्स ओके, तो कभी कभी लिखना भी जरूरी होता है। तो अब स्प्लैंक्नो प्यूरिक मेसोडर्म, अब इसका बेटा अपोजिट कर दो, पेराइटल प्लूरा था, तो स्प्लैंक्नो प्यूरिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म से क्या आएगा, स्प्लैंक्नो का मतलब क्या होता है, विसरल, जो ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे लिखिए, इट इज द विसरल प्लूरा, the visceral pleura, okay, the pericardial and the peritoneal part, जो अंदर वाली लाइनिंग है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, स्मूथ मसल्स, अब अगेन इट मेक सेंस गाइस, विसरल है, अब ये जो आर्टरीज वेन्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, तो ये भी कहाँ से आ रही है, स्प्लैंक्नोप्लूरिक से, अंदर वाले पार्ट से। इवन द कार्डियक मसल्स गाइस, they will also arise from over here only, cardiac muscles, right? So this is all you have to keep in mind. This is all you have to keep in mind. Planktopleuric lateral plate mesoderm. So we have discussed today. So let me just focus what we have discussed today. The third week of gastrulation already have started yesterday. The primitive streak, the primitive knot, and I have drawn one diagram where I've shown you the formation of the notochord. This notochord will, what are the remnants of the notochord? I've shown you the transfer section from the level of the notochord, how the neural folds are there, how it will form the neural tube. And again, I've discussed a clinical situation that is the sacrococcygeal teratoma. Okay, and I have discussed the differentiation of the mesoderm into paraaxial, intermediate, and lateral plate. Intermediate mesoderm, when I will discuss the kidney वाला part, the urogenital embryology with you, तब मैं उसको वहां पे अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है, तब मैं उसको वहां पे और अच्छे से डिस्कस करूंगा, राइट। तो अभी के लिए हमने पैरा एक्शन में सोमाइट्स का सारा देख लिया कि कैसे कैसे हमारा पूरा डर्मिस और वो लिम्स और मसल्स हो रहे हैं, स्केलेटल मसल्स। लेटरल प्लेट में हमने देख लिया व्हाट इज सोमैटोप्लूरिक गिविंग राइज टू, स्पैंक्नोप्लूरिक गिविंग राइज टू, एंड व्हाट आर द फेट्स ऑफ द इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, वो सारा कैविटीज जितनी भी बनती है, प्लूरल, पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल। आई होप दिस ऑल इज क्लियर, and I want to discuss one more topic, that is the decidua. I hope you guys are not tired, so just give me a thumbs up that you all are ready to proceed now, क्योंकि एक तो टॉपिक्स और पढ़ लेते हैं, we can discuss one or two more topics over here right now, so that it becomes way easy for you people to know what is decidua. Yes, yes guys, tomorrow guys I will be starting with the GIT part, GIT embryology start करूंगा, और जैसे जैसे जो भी सिस्टम में करवाऊंगा, whatever system I will discuss guys, for example if I am starting with the gastrointestinal system, first, I will discuss the embryology of GIT. Till now, we have discussed the general embryology, which is applicable like to every system. I will continue from here only where I left, right? In the GIT. Or if I'm discussing kidney, or if I'm discussing the reproductive system.
So first I will discuss the embryology of the GIT, then I will discuss the core anatomy, every muscle, blood supply, nerve supply, all the organs, liver, spleen, pancreas, peritoneum, everything I will discuss in detail with beautiful, beautiful diagrams. It is mandatory for you to attend the sessions live, beta, because once you will learn live और notes होंगे आपके पास, तो you will be like the happiest person कि आप लोगों ने पहले से ये सब चीजें पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पैथोलॉजी के पॉइंट्स बताऊंगा या सर्जरी के पॉइंट्स बताऊंगा, जीआईटी में सर्जरी सबसे वास्ट टॉपिक है, बच्चों को सर्जरी समझ ही नहीं आती, क्यों? क्योंकि अनाटमी नहीं आती, एम्ब्रियोलॉजी नहीं आती, तो इस वजह से फिर दे लैक अप हैविंग good building up good concepts. So that's why it is important to learn from the scratch. इसलिए मैंने अभी जनरल पढ़ाई है, कल जीआईटी की एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद उसकी एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, स्टमक, सब सरफेस बॉटम, एक एक चीज पढ़ेंगे, और बहुत सिंपल सिंपल डायग्राम्स में। आई एम नॉट मेकिंग यू राइट थीसिस और समथिंग, so draw simple diagrams with me, learn along with me through the diagrams, and it will be like you will be perfect in these topics. बेसिक से पढ़ोगे, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, रटिफिकेशन काम नहीं आएगा। चलिए, with this note just let us discuss. Now, whenever implantation takes place, whenever implantation takes place, now remember, the uterine endometrium, the uterine endometrium is called as decidua. The uterine endometrium is called as decidua. Okay. Now बेटा, जब भी implantation हो जाती है ना, तो यूट्रस की जो 3 लेयर्स होती है, you already know the 3 layers, endometrium, myometrium, perimetrium. जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, एक बार जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कर जाता है, इट इन्वेड्स इनसाइड द दिस एंडोमेट्रियम, तो इस एंडोमेट्रियम को एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डेसिडुआ, दैट इज कॉल्ड एज द डेसिडुआ। ओके, नाउ दिस डेसिडुआ, इन सिंपल वर्ड्स, इफ आई हैव टू लाइक से, इट इज endometrium after implantation. It is endometrium after implantation. It is endometrium after implantation. Now, let us just draw a beautiful diagram, and in one diagram it will be like way clear to you guys. Now, for example, now suppose this is the uterine, okay, the uterus, okay, the uterus guys, and you already know have already invaded inside. So here we have this particular embryo, right? This embryo, sorry, blastocyst is right. Now, this blastocyst is there. So remember, guys, the blastocyst will be connected to this particular. So, okay, now there are three types of decidua that you will see over here. One decidua that will be, okay, lying along, okay, that will be lying along this, which will connect the endometrium to this decidua. This is called as the decidua capsularis. Decidua or decidual, decidua capsularis. Decidua है वो, ठीक, L मत लगाना. Decidua capsularis. Okay, it is connecting the, I mean, the endometrium to the blastocyst. Now, this blastocyst, okay, it is connected to the connecting stalk, or I can say the umbilical cord, okay, and this is connecting to the future placenta. Okay, this is connecting to the future placenta, okay, on this maternal wall. So this part, it is called as the decidua basalis. Decidua basalis,
and it is often referred to as the maternal side of the placenta. It is often referred to as the maternal side of the placenta. Okay, or it is the site for the future placenta, you can say, right? Maternal site of placenta, or it is like the future site for site for the future placenta, right? Apart from that, one decidua will cover the entire. The rest decidua is just present all around the uterus. Okay, and this decidua, it is called as decidua parietalis. Parietal covering पूरी जगह ये decidua present है. So this decidua is called as decidua parietalis. Right. So that was just a small diagram regarding that. I hope it's way clear to everyone now. I hope it's way clear to everyone now. Hmm. चलिए फटाफट से बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यस. तो यस, हाँ, डेफिडुआ बेसालिस बेटा याद रखिएगा, इट इज जस्ट बिलो द ब्लास्टोसिस्ट, इट इज सेपरेटिंग द ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम द मायोमेट्रियम. ठीक है, एंडोमेट्रियम अंदर वाली लेयर हो गई और बाहर वाली क्या हो गई, मायोमेट्रियम. फिर क्या आ जाता है, ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो वी हैव द पेरीमेट्रियम. तो ये जो डेसिडुआ बेसालिस है ना, इट इज सेपरेटिंग द ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम द मायोमेट्रियम वाला पार्ट. ठीक है, और इट इज द साइट वेयर द फ्यूचर प्लेसेंटा विल बी फॉर्म्ड. ओके, और इसको मेटर्नल साइट ऑफ द प्लेसेंटा भी बोलते हैं, राइट? एंड दिस डेसिडुआ कैप्सुलारिस, अंदर क्या है बेटा? अंदर क्या है, बेसिकली वी हैव द यूट्राइन कैविटी. So remember that decidua capsularis, it is separating blastocyst from the uterine cavity. Separating the blastocyst from the uterine cavity. System. This is separating blastocyst from uterine cavity. From the uterine cavity. डेसिडुआ बेसालिस क्या है, ये देखो अंदर वाली क्या है, एंडोमेट्रियम हो जाएगी ना, और बाहर फिर क्या आएगी, मायोमेट्रियम. तो ये एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में जो ये डेसिडुआ प्रेजेंट है, दैट इज द डेसिडुआ बेसालिस. और यहीं पर क्या बनता है, इट इज सेपरेटिंग द ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम द मायोमेट्रियम वाला पार्ट. तो ये रेड वाला जो है, इसको सेपरेट करा है ब्लास्टोसिस्ट को मायोमेट्रियम से, और यहीं पर जाकर क्या बनेगा आपका, फ्यूचर प्लेसेंटा विल बी फॉर्म्ड, राइट? तो आई होप, और बाकी सब जगह जो प्रेजेंट है ऑल ओवर द यूट्राइन वॉल, इट इज द डेसिडुआ पेराइटालिस, पेराइटल वॉल पूरा का पूरा कवर होगा. ठीक है, तो आई होप दिस पार्ट इज आल्सो लाइक वे क्लियर टू एवरीवन. Okay, this is way clear to everyone. I have to discuss the fate of chorionic villi, guys, now. Fate of chorionic villi, again a very important topic. Okay, again a very important topic. ये फटाफट से समझ लो ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए आप लोगों को. ठीक है. Now, again the same diagram I will try to draw, और इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है. I will show you the how the placenta is formed. I will show you how the placenta is formed. So believe me guys, this way of understanding is very very easy. डायग्राम बनाओ और डायग्राम के साथ सीखो. यूज कलर्ड पेन्स गाइस, आई एम ऑलवेज टेलिंग यू टू यूज द कलर्ड पेन्स. So we already know we have the amniotic cavity in between, and we have something which is called as the yolk sac. Like I'm least concerned about the outer part. अब हम कोरियोनिक विलाय की बात करेंगे. तो अब मुझे बताइए, कोरियोनिक, कोरियन किसको बोलते हैं? व्हाट इज कोरियन गाइस? मैंने आपको पहले भी बताया था, कोरियन किसको बोलते हैं? तो फटाफट से बताओ, कोरियन किसको बोलते हैं? इट इज द, आई कैन से, चलो कोरियन किसको बोलते हैं, फटाफट से पहले आंसर दो. मीनवाइल आई एम जस्ट लेबलिंग ऑल द पार्ट्स. तो ठीक है, इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट. अब हम पूरा अच्छे से देखेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट.
तो साइटोट्रोफोब्लास्ट भी सेल्स ही है. Okay, we have the cells. Hmm. Yes. कोरियन किसका बना है? What is the constituent of the कोरियन? कोरियन किन दो चीजों से मिलके बनी है बेटा? मुझे यही तो जानना है. कोरियन, it is formed from which two things, guys? तो साइटोट्रोफोब्लास्ट है. ठीक है. Yes, Dimple D. Very good, Chetna. Very good. It is the, yes, somatopuric extra embryonic mesoderm plus the trophoblast. Yes. Yes, everyone is fine. Nitika, Angel, Manish. Okay, very good, guys. तो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है. साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर, साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर यू विल इनकाउंटर अ लेयर, और लेट मी जस्ट ड्रॉ इट येलो कलर. You will encounter a layer that is present around the cytotrophoblast, और ये जो layer है that is the syncytial layer. ये syncytium trophoblast है. syncytotrophoblast में क्या है, सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो ये वो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ओनली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. So they are actually lying outside the cytotrophoblast. So yes, we have this syncytotrophoblast. Syncytotrophoblast. Yes. Syncytotrophoblast. Yes. Everyone is right. Syncytotrophoblast. Now, अच्छा. अब syncytotrophoblast के बाहर, you guys will tell me what is present. What is this blue color that I am highlighting right now? syncytotrophoblast के बाहर ये जो blue color से मैं बना रहा हूँ, ये क्या है? चलो, anyone? Yes, Angel Matthews, very good. It is the endometrium. Very good. Nice usage of brains. कल का याद है मुझे लगता है सब कुछ. तो ये हमारा क्या हो गया? एंडोमेट्रियम. तो ये क्या हो गया? एंडोमेट्रियम. राइट. नाउ, अब ये एमनियोटिक कैविटी है. एमनियोटिक कैविटी. और ये क्या है? सेकेंडरी yolk sac. सेकेंडरी yolk sac. राइट. इट इज सेकेंडरी yolk sac. सब सही है. तनु, कृति, अनुष्का, तनु, तन्वी, नितिका, डिम्पल, वेरी गुड. एवरीवन इज राइट. अब सेकेंडरी yolk sac के बाहर, now can you tell me what is this which I'm highlighting with green color? What is this which I'm highlighting with green color, guys? देखता हूँ किसको कितना याद है. फटाफट से बता दो. What is this which I'm highlighting with green color right now? चल, जल्दी से बताओ ये क्या है which I'm highlighting with. Yes, extra embryonic mesoderm. Very good, Tanu. Very good, Manish. Very good, beta. It is the extra embryonic mesoderm. Yes. ये पूरा हाईलाइट कर लेना बेटा, इतना टाइम नहीं है, तो अदरवाइज आई वुड हैव डन कंप्लीट, पूरा अच्छा सा पिक्चर बनाता मैं. तो इट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोटर्म और सोमैटोफ्यूरिक वाला है. हाँ, कोई दिक्कत नहीं. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक mesoderm. Now, you already know this cytotrophoblast is giving finger-like projections in the syncytotrophoblast. तो इस finger-like projections को क्या बोलते हैं? What is this finger-like projections called, guys? They are giving this finger-like projections all around. क्या बोलते हैं इन finger-like projections को? I just wanted to know from you people. या सोमैटोफ्यूरिक वाला है, ठीक है. What are these finger-like projections called as? Yes, chorionic villi. Very good, very good. Obviously बात है ना.
कोरियन ही बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोरियोनिक विलाय हो गया। वेरी गुड, एवरीवन इज राइट। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कोरियोनिक विलाय। अब keeping this particular picture in mind, guys, keeping this particular picture in mind, now I will tell you how the future placenta will be formed, right? प्लेसेंटल फॉर्मेशन अभी बाद में आएगा, पहले अब हम इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, उसी को दोबारा से रिकैप कर लेते हैं और फिर प्लेसेंटल फॉर्मेशन देखेंगे। तो व्हाट आई हैव डन गाइस, आई विल टेक अ स्मॉल सेक्शन फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये आपको दिख रहा है, विच आई हैव जस्ट हाईलाइटेड। A small section from here to here I will take and I will just try to show you over here। एक small section से देख के समझते हैं कि बाकी सब जगह पे क्या हो रहा है, ठीक है, एक small section से देख के समझेंगे कि बाकी सब जगह पे क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ डायग्राम्स बनाते रहो साथ साथ, लिखने का काम नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाओ और समझो। लिखवाऊंगा अभी, पहले डायग्राम बनाते रहो। चलो बाहर वाली लेयर से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो बाहर क्या प्रेजेंट है, तो बाहर you already know there is a layer which is called as the endometrium। तो बाहर क्या प्रेजेंट है, एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है, राइट। फिर अंदर क्या आ जाती है लेयर, you already know we have the syncytiotrophoblast, ठीक है, we have the syncytiotrophoblast। We have the syncytiotrophoblast and inside it beta remember, inside it the black one वाला क्या है, we have the cytotrophoblast, right। हाँ, सब मार्किंग करेंगे अभी, डोंट वरी। Inside it we have this particular layer that is called as the cytotrophoblast। तो अब साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो ये ग्रीन कलर की लेयर है, यू ऑलरेडी नो इट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक mesoderm, right? And which extra embryonic mesoderm is there? You already know it is the somatopluric extra embryonic mesoderm। तो फटाफट से ना लेबलिंग डाल देते, ठीक है। You already know this particular structure, it is called as the cytotrophoblast, right? Cytotrophoblast, and it has finger like projections, okay। Now guys remember to draw it very carefully, these finger like projections are not invading into the endometrium, okay। So these are called as the chorionic villi which are arising from the cytotrophoblast। So we have the chorionic villi, this yellow color structure, it is the syncytiotrophoblast, syncytiotrophoblast, okay। This blue color structure, you already know we have the endometrium, and the green color structure, it is the extra embryonic mesoderm, extra embryonic। क्या इस पिक्चर में कोई दिक्कत है किसी को, फटाफट से उसका एक स्मॉल पोर्शन बना के मैंने यहाँ बना दिया है, क्या कोई दिक्कत है। सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट जिसमें आपको पता है न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है, डजंट कंटेन एनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस इज देयर एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ गाइस, सब क्लियर है। थम्स अप दे दिया करो बेटा एक एक बार बीच में ना, तो मुझे क्लियर रहे कि यू गाइस आर लिसनिंग मी आउट केयरफुली। नो प्रॉब्लम सर, ओके। कृति वेरी गुड, अनुष्का वेरी गुड, तनु, गरिमा, महफूज वेरी गुड, ऋतुजा वेरी गुड। तो अब इसी में हम लोग और देखते हैं। नाउ इस एंडोमेट्रियम, अब इसी को थोड़ा सा और दिखाते कि एक्सचेंज कैसे हो रहा है और प्लेसेंटा कैसे बनेगा। बेटा बहुत जरूरी है समझना, बहुत बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि प्लेसेंटा कैसे बन रहा है। तो रिमेंबर गाइस, इसी एंडोमेट्रियम में गाइस यू विल हैव ब्रांचेस ऑफ यूट्रस। अब ये रेड को ना ये थोड़ा सा ब्लैकिश आ रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता
You have to understand कि इसी endometrium में you will have something which is called as the maternal blood vessels. We have the maternal blood vessels. और स्पेशली अगर बात की जाए तो these are the uterine arteries only, the branches of the uterine artery, है ना? The branches of the uterine artery. देखो, mother is responsible to carry all the blood to the fetus through placenta. अब तो placenta देखेंगे ना, तो endometrium जो है, obviously बात है, उसमें maternal blood vessels present होंगी, उसमें maternal blood vessels present होंगी. Okay? And what will happen, guys? Now in the syncytiotrophoblasts, okay. Now there will be formation of lacunae in the syncytiotrophoblasts. तो अभी इसी डायग्राम को थोड़ा सा और elaborate करते हैं. देखो. Now, you guys already know that, yes, what is the fate of chorionic villi over here, guys? Now see, what will happen? This tryphoblastic shell, okay, okay, simultaneously, what will happen, guys? There will be formation of lacunae over here, okay? Lacunae will be formed. Small spaces will be there in between these, what we say, these chorionic villi. And obviously, these are called as the lacunae, okay? And there is formation of lacunae also taking place over here. Formation of lacunae. Okay, there is formation of lacunae over here. Okay, now what these lacunae will do? Now, what these lacunae will do? Now, these lacunae will take the blood from the maternal blood vessels. Okay, and these lacunae will now be filled with maternal blood. So again, if I just want to show you in the diagram, guys, right? So what will happen? What is the second part that I'm going to draw for you people? Remember that this is the primary villi. And now this primary villi is getting insertion of what? Extra embryonic mesoderm. Now tell me what will be the name? Agar extra embryonic mesoderm is getting inside into this primary villi, chorionic villi, what will be it now called as? What it will be now called as? Agar extra embryonic mesoderm will come in this primary villi, what it will be now called as? Secondary chorionic villi. Very good, Angel Matthews. Fun note, Anushka. Very good, guys. It will be secondary chorionic villi. ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था. I just wanted to like, yeah, make it more clear. So this particular structure is called as the secondary chorionic villi, और वो इसलिए क्योंकि we have the extra embryonic mesoderm which is going inside this cytotrophoblast. Cytotrophoblast. Right? Now, again, guys, मैंने अभी बोला कि यहाँ पे we have the lacunae which are filled. Okay? The lacunae will now receive the blood. Okay? The lacunae will now receive the blood from this maternal blood vessels. Okay? These lacunae will receive the blood from this maternal blood vessels, and this lacunae will now be filled with blood. Okay? This lacunae will now be filled with blood. Okay, so I can simply say we have the lacunae filled with maternal blood. Maternal blood. साइड बाय साइड देखते जाओ क्या क्या होता जा रहा है. सेकेंडरी कोरियोनिक फिलाई बना, सेकेंडरी कोरियोनिक फिलाई बना, और जो मेटर्नल ब्लड वेसल्स थी, ये जो लेक्यूने बन रहे थे, और लेक्यूने ओके, टेल मी लेक्यूने आर फॉर्म्ड इन व्हिच पर्टिकुलर सेल लेयर? टेल मी लेक्यूने आर फॉर्म्ड इन व्हिच पर्टिकुलर सेल लेयर? जल्दी से बताओ, लेक्यूने आर फॉर्म्ड इन व्हिच पर्टिकुलर सेल लेयर? जल्दी से बता दो फटाफट से चैट बॉक्स में. I'm not drawing like entire completely. Yes. Syncytiotropoblast. Very good, Anushka. It is the syncytiotropoblast, right? It is the syncytiotropoblast.
हाँ, सिंसाइटो है, सिंसाइटो है। वेरी गुड एवरीवन, डिम्पल जी, तनु, गरिमा, इतना ओमकार, वेरी गुड बेटा। इट इज द सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और रिमेंबर, ये जो मैटरनल जो ये ब्लड वेसल्स है, दे आर नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंडरी विलाई, राइट? तो ये जो ऊपर है, आप लोग को ये याद रखना है, ये जो सेकेंडरी विलस है, ठीक है, सॉरी, यूट्राइन एंडोमेट्रियम, मैंने थोड़ा सा वो बना दिया, इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट, बट ये कभी कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है? तो या इट इज लाइक दिस, जस्ट हैव टू ड्रॉ द सेम डायग्राम। इतना क्लियर हो गया सब लोगों को? प्राइमरी कोरियोनिक विलाय और एंडोमेट्रियम का कोई कनेक्शन नहीं है, सेकेंडरी का भी कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है? इतना कोई कनेक्शन नहीं है। इतना क्लियर हो गया साइमल्टेनियसली क्या क्या चल रहा है? चल, अब इसी को आई जस्ट कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज, आई जस्ट कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज आई एम सेइंग, आई कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड द डायग्राम। नाउ बेटा कलर कोडिंग याद रखिएगा, कलर कोडिंग याद रखिएगा, ठीक है? नाउ व्हाट विल हैपन गाइस? नाउ व्हाट विल हैपन गाइस? रिमेंबर, you already are aware that, या यू ऑलरेडी आर अवेयर कि अभी तक हमारा क्या बन गया है? Complaint have a bad handwriting. Just drawing this primary villi, right? So now there is invasion of this particular, yeah, we have, what color code I've used? I've used green. So this extra embryonic mesoderm, it is getting invade into this particular primary chorionic villi, and now soon after some time, like day 21, okay, the fetal circulation, what will happen? The branches will go, okay, the fetal blood capillaries will move inside this. Now tell me guys, which, what structure it will be now called as? What structure it will be now called as? जब fetal की capillaries भी आ गई हैं, extra embryonic mesoderm भी आ गया, अब fetal capillaries भी आ गई हैं, ठीक है, fetal blood vessels आ गई हैं, what it will be now called as? Yes, tertiary corniculate is called as the tertiary chorionic villi, right? Tertiary chorionic villi, okay? ऑब्वियसली बात है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये ब्लैक वाली क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट, ओके? वी हैव द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोटर्म जो कि ग्रीन कलर से है, और फिर ये जो रेड बनाया था मैंने, जो ब्लैक में चेंज हो गया, दीज आर द फीटल ब्लड वेसल्स, फीटल ब्लड वेसल्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फीटल ब्लड वेसल्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्शियरी कोरियोनिक विलाय। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि वी हैव द लैक्यूनेस व्हिच आर फिल्ड विद ब्लड। So on the other sides of these, in the syncytiotrophoblastic region, we have the lacunae which are filled with blood. Okay, which are filled with blood. So yes, and this is something which is present in. देखो अब वो सेम चीजें रहेंगी बार बार, I just cannot like draw. So you should remember कि, yeah, it will be the syncytiotrophoblastic which the blood filled lacunae will be there, and blood kahan se aaya? It is coming from the uterine vessels, uterine arteries and all the branches of the uterine arteries, and it is getting poured into the lacunae which were there in the syncytotrophoblast. तो और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये सब चीजें तो क्लियर हो गई हैं सब। तो दिस इज इन, एक तो ये
lacunae filled with blood vessels, lacunae filled with blood vessels, and we have cytotrophoblast over here. और ऊपर आपको पता ही है क्या प्रेजेंट होगा, एंडोमेट्रियम प्रेजेंट होगा. ठीक है. So I hope this particular picture is clear up till now. Okay. फटाफट से एक थम्स अप दे दो बेटा, ये क्लियर है तो लास्ट हम लोग प्लेसेंटल फॉर्मेशन पढ़ेंगे. Just give me a thumbs up that this picture is clear to everyone. Anushka says, okay, sir, it's clear. Tanupriya, okay, perfect. फटाफट just give me a thumbs up that this picture is clear कि what is happening up till now. अब थोड़ा exchange बनाना पड़ेगा बेटा. Now exchange has to take place and that's the reason I will draw yeah, placental formation. Hardly two diagrams in placenta I will draw and everything will be like crystal clear to everyone. Okay, everything will be like crystal clear to everyone. I hope you guys are not tired. थक तो नहीं गए हो तुम लोग? मेरा जो करवा रहा हूँ these are like important ones and color pencils रखो तो it will be like last two diagrams beta. Yes, I will complete it. I will not. Yes, I will complete this. प्लेसेंटल फॉर्मेशन अभी समझ लो क्योंकि कल मुझे जीआईटी एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करनी है किसी भी हालत में. या तो अब नाउ प्लेसेंटल फॉर्मेशन में बेटा अब ये देखो. अब ये जो कोरियोनिक विलाय है बेटा, ठीक है, दीज कोरियोनिक विलाय, अब ये क्या बना रहा हूं मैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट बना. Now remember guys, this is what I'm drawing. It is the chorionic villi which now gives or gives branches और उसको हम लोग बोलते हैं the finger like projections, the villus. Okay, and these are given a special name. Now this is the cytotrophoblast. ये अब मैं बार बार मार्क नहीं करूंगा. ब्लैक कलर अभी समझ जाना बेटा, कलर कोडिंग मैंने पूरी फॉलो की है. तो जहां से भी मैंने स्टार्ट किया है, दिस इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट, राइट. So the primary stem, okay, now this will again, ये जो chorionic villi होता है ना बेटा, it will give finger like projections more, it will branch more, it will branch more and it will give these like finger like projections. And again guys, I'm telling you it never touches the what we say, the endometrium, it never touches the endometrium, right? So yes, this is the main primary stem which it is called as the ramus cori. It is called as the ramus cori. Sorry, ramus. Okay, just a moment. I'll just mark it. This is not the ramus cori. Ramus cori is the one which like the first branching that it is. The first branching that it is giving rise to. The primary stem, it is called as the stem villi only. It is called as the stem villi. Okay, or in other words I can call it as the truncus cori. ये कोरियन का ही पार्ट है ना बेटा, इसलिए उसको हम कोराई बोल रहे हैं. ठीक है. So yes, it is the ramus cori and we have these stem villi which is giving rise to this ramus cori. And again guys, now remember guys, this ramus cori will again branch better. This will again branch and it will give rise to, remember this is called as the remuli cori. Okay, it is called as the remuli cori. Secondary branches, these are called as the remuli cori. Again, yes, just
on it. I hope this picture is clear everyone. तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये जो आपका जो मैं अभी ये क्यूबर्डल जैसा बना रहा था ना, ये क्या कहते हैं प्राइमरी कोरियोनिक विलाय जो था, टर्शियरी कोरियोनिक विलाय, इसी की मैंने बस ब्रांचेस बना दी और उन ब्रांचेस के नाम लिख दिए। इसी की मैंने ब्रांचेस बना दी और उस ब्रांचेस को मैंने नाम दे दिया और कुछ नहीं है। ओके, नाउ नाउ दीज कोरियोनिक विलाय, ओके, नाउ व्हाट दे विल डू, they will they will develop a shell. Okay, these chorionic villi will develop a shell, and this shell will separate this from the endometrium. And this shell, it is called as the cytotrophoblastic shell. Cytotrophoblastic shell. Okay, this is called as the cytotrophoblastic shell. Okay, now remember, guys, again, चलो पहले जो मार्किंग्स है वो देख लेते हैं। फटाफट से मुझे बता दो, द येलो कलर विच आई एम ड्राइंग राइट नाउ, ये क्या है? व्हाट इज दिस येलो कलर दैट आई एम ड्राइंग राइट नाउ? चलो ये जो येलो कलर है फटाफट से बताओ, व्हाट इज दिस येलो कलर दैट आई एम ड्राइंग राइट नाउ? Yes, syncytotrophoblast. Yes, yes, yes. Very good, very good. It is the syncytotrophoblast. Now, what is present inside the syncytotrophoblast? See the previous diagram and tell me what is present in the syncytotrophoblast. Yeah, I cannot draw completely. Yeah, what is present inside the syncytio? Lacunae were present. Yes, lacunae filled with bloods were present, right? So yes, we have the lacunae which are filled with the bloods, and these have now grown in large size, right? And remember that these lacunae which are filled with bloods are getting the blood supply, right? These lacunae are getting the blood supply from the endometrium. So we have the uterine vessels, the uterine arteries, and along with that, we have the uterine veins, right? The branches of the uterine veins are also there. So they are actually invading the cytotrophoblastic shell and they're getting into it, right? And above this cytotrophoblastic shell, above the syncytium, what is present, guys? Tell me. Yes, above it, what will be present, guys? Tell me. This uterine blood vessels are coming from where? Yes, the endometrium. Very good, Anushka. These are coming from the endometrium. So yes, they're all coming from the endometrium. They're all coming from the. Now, over here, you can again show there is invasion of the extra embryonic mesoderm. Extra embryonic mesoderm. And again, guys, there will be fetal blood vessels also present over here. Okay, the fetal blood vessels will also be present over here. So I hope this particular picture is clear, everyone. This particular picture is clear, everyone. Right? This particular picture is clear, everyone. Correct. Very good. Perfect. अब एक लास्ट डायग्राम और फिर बिल्कुल ये प्लेसेंटा वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट डायग्राम, फिर ये प्लेसेंटा वाला पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, यस तनुप्रिया, ओके परफेक्ट बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, नाउ द एंडोमेट्रियम, now this endometrium will try to break the cytotrophoblastic shell, okay, and it will create like some space in between, okay, and that space will be filled with the endometrium. Okay, now this cytotrophoblastic cells, this endometrium will try to break the cytotrophoblastic cells at some points, right? It will try to break the cytotrophoblastic cells at some points, and now what will happen, guys? See, now what will happen? It will have invaginations now, like this. It will try to break, and there will be certain invaginations which will be like present like this, right? So, yes. So there will be certain invaginations because of this endometrium, right? So this structure, it is called as the endometrial septum. Endometrial septum, because the septa is created ना, बीच में एक दरार सी पड़ गई है, तो it is called as the endometrial septum or septate. Okay. Now you already know the endometrium, which is actually the deciduous, will now try to actually, it will invade into these endometrial septum, right? It will try to invade into these endometrial septum. Okay. Yes, let me just follow the color code. So it will just try to invade into these endometrial septum. So yes, just try to see over here, guys, right? So yes, right. Now, now, okay. Now what will happen? This particular structure from here to here, this structure, it is called as cotyledon. It is called as cotyledon. Okay. Now, this will actually have, yeah, what will be there, guys? This, you already know we have the cytotrophoblast, which is like branching, giving rise to these villi, right? Just drawing it like roughly. You guys have already drawn it nicely with me. So this is something which is called as the cotyledon. Okay, cotyledon. Now you already know that we have this particular structure, and obviously this is the cytotrophoblast. You already know, right? Okay, this is the cytotrophoblast. Okay, cytotrophoblast. Now this is the space which is present now. This space will be filled with blood. Okay. So we have these lacunae will pour these bloods over here. Okay, lacunae क्या करेंगे, इन blood को बिल्कुल इसी space में they will give it out. So we have the intervillus. इन विलाय के बीच में, इंटर का मतलब क्या होता है, in between two. Inter means in between two. Intervillus spaces, they are will be filled with blood. They will be filled with blood, and you already know if they are filled with blood, what these finger-like projections do. They will take the blood, and they will take the blood from here, and they will actually go to this particular structure, and that is something which is called as the umbilical cord. I've already told you the umbilical cord is the connecting stalk. It is the connecting stalk, beta. Connecting stalk.
नाउ टेल मी अम्बिलिकल कॉर्ड में कौन कौन सी वेसल्स प्रेजेंट होती है, वही बना दूंगा। नाउ टेल मी अम्बिलिकल कॉर्ड में कौन कौन सी वेसल्स प्रेजेंट होती है। थोड़ा बहुत भी पता है तो यू कैन लाइक आंसर। नाउ गाइस रिमेंबर दैट यस वन वेन इज लेफ्ट, और हमेशा मैं कहता हूँ जो लेफ्ट हुई है ना वो लेफ्ट वेन ही है, एक ही वेन बचती है, एंड वी हैव टू आर्टरीज। यस एवरीवन इज राइट, वी हैव टू आर्टरीज एंड वन वेन, एंड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन इज लेफ्ट बिहाइंड, तो वो छूट जाती है, ठीक है, राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर्स। So guys, remember that following the color code, guys, remember whatever I'm drawing, it is the artery, right? So we have two umbilical arteries, right? We have two umbilical arteries, right? We have the two umbilical arteries. Just we have the two umbilical arteries. Just draw it like, and they are entering these villas, and we have one umbilical vein. Now you guys will tell me कि I'm drawing the umbilical artery with blue color. Why I have done this, guys? These are two umbilical arteries. These are two umbilical arteries which I have drawn with blue color. Why I have done this? Have I drawn it wrong? Sure. Very good. Answer दे दो अगर पता है. और we have one umbilical vein that I'm drawing with red color, and make sure it's a little thick. Okay. So there is one umbilical vein, right? And it will be like more thick. So we have this umbilical vein. Ah, Devesh Mishra, very good. We have this umbilical vein, and it is one only, right? And the entire structure, it is called as the umbilical cord. Umbilical cord. So I hope अब ये आप लोगों को exchange समझ में आ गया. This is the future placenta, guys. ये बन गया हमारा placenta वाला part. तो placenta में cotyledons देखने को मिल गए. Yes, so Wing called right. Placenta में cotyledons देखने को मिल गए. इंटरविलर स्पेस में ब्लड कहाँ से आया? दैट इज ड्यू टू दीज लैक्यूने. लैक्यूने को ब्लड कहाँ से मिला? एंडोमेट्रियम से, जो ब्लड वेसल्स आ रही थी उन्होंने फिल करके ले लिया, ठीक है. एंड these intervillous space will take the blood and it will supply to the umbilical cord and rest to the fetus. That's again a story in CVS. We'll discuss how the exchange is taking place. So, but the basic formation जो है प्लेसेंटा का वो आप लोग को क्लियर हो गया है. Is it clear everyone? Just give me a thumbs up that this picture is clear, क्योंकि यही था placental formation that I wanted to discuss with you people. Tanupriya says, yes, sir, it's clear. It's clear. Okay. Yes. चल दो चार पॉइंट्स लिख ले बेटा. If you are ready to write something, yeah, just let us write two, 3 points. Hmm. Just to complete the topics. कल भी थोड़ी कम क्लास हुई थी, तो let us just discuss some topics now. Cotyledons, guys. Remember that, guys. 15 to 20 cotyledons are formed. Okay. 15 to 20 cotyledons are formed. Okay. And every cotyledon has two to three, two to three chorionic villi. Okay.
Now they are anchoring the fetal side to the maternal side. Obviously बातों को support करे ना, fetal side को maternal side से connect करने की कोशिश कर रहा है. So yes, these are called as anchoring villi. Okay. So every cotyledon has 2 to 3 chorionic villi, or I would say it as anchoring villi, right? Anchoring, because they're anchoring the fetal side to the maternal side. Now, some terms regarding placenta. Full term placenta. Full term placenta. Remember, it is having flat, circular, disc-like structure, and it is discoid-like. It is discoid-like. Remember the diameter of placenta. Okay. Diameter of placenta, it is 15 to 20 centimeter. Diameter of placenta, it is 15 to 20 centimeter. The weight of placenta is approximately around 500 grams. We have two surfaces of placenta. एक surface होता है, it is towards the maternal side, so it is called as the maternal surface. And one surface, it is towards the fetal side, so it is called as the fetal surface. Okay. Maternal surface पे you will find which structure? Cotyledons. अभी मैंने दिखाए थे आप लोगों को. I've just shown you right now. Cotyledons. And on towards the fetal surface, guys, you will see umbilical cord. Umbilical cord. Okay. And remember this umbilical cord, it is flat. Okay, it is shining. If you just have to recognize it. And remember, it is covered with amnion. Okay, it is covered with amnion. Shining, why? Because it is covered with the amnion, right? So this was regarding the full term placenta. Full term placenta. So let us now discuss regarding. Okay, I have to just discuss the functions and the placental membrane. Are you guys willing to study now? I hope you guys are not tired. Just two more topics, one slide I will take. If you guys agree, I'll just complete it off. बाद में नहीं कहना सर ज्यादा पढ़ा दिया. चल, ठीक ठीक है, कंटिन्यू कर लेते. मेरा दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए. आई जस्ट वांटेड टू लाइक फिनिश इट ऑफ. Now guys, one important topic, that is placental membrane. Placental membrane, guys. You already know, guys, that placental membrane, if we talk about this particular structure, you already know it is, which cells are these? These are cytotrophoblast, right? We have this cytotrophoblast. Outside the cytotrophoblast, the one which I'm drawing with the yellow color, the one which I'm shading with the yellow color, guys, it is the thin cytotrophoblast. So what is actually the placental membrane? This has been a question also. So yes, these are the thin cytotrophoblast, one without the plasma membrane. So yes. So yes, this is the thin cytotrophoblast, right? Inside it, you already know we have this. Yeah, inside it, you already know we have this extra embryonic mesoderm, right? Extra embryonic mesoderm, extra embryonic mesoderm, and inside the extra embryonic mesoderm, remember, guys, we have the blood vessels. We have this blood vessels.
blood vessels. So now, how the placental membrane is formed from outer to inner. Okay, from now from outer to inner. Now you guys will name this the outermost layer, guys. Yes, the outermost layer. Yes, it is the thin trophoblast. We have the thin cytotrophoblast. Then we have the layer of cytotrophoblast. We have the layer of cytotrophoblast. Then we have basement membrane of trophoblast. इस साइटोट्रोफोब्लास्ट है और साइटोट्रोफोब्लास्ट की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. This is called as the basement membrane. Okay, basement membrane. So remember we have the basement membrane of cytotrophoblast. Okay, we have extra embryonic mesoderm, and we have, देखो blood vessels में specifically अगर हम बात करें तो capillaries है, and capillaries are composed of which cells, guys? Capillaries are composed of which cells, guys? Tell me. Capillaries are composed of which cells? So yes, remember we have endothelium. Yes, very good. We have endothelium and basement membrane of fetal capillaries. Basement membrane of fetal capillaries. Yes, everyone is right. Tanu, Anushka, Surveen, Garima, Mehfooz, everyone is right. Endothelium and basement membrane of fetal capillaries. Right? See, the placental membrane, because there is more requirement of nutrition, so it becomes like more thin. Okay, it is like 0.002 millimeter. That's not a fact that you have to remember. And the last topic for today that I wanted to discuss, guys, it is the functions of the placenta. Okay, so yes, functions of placenta, and that you can remember with the help of mnemonic WhatsApp. Okay, WhatsApp. WhatsApp तो सभी यूज करते हैं. जिंदगी में तुम लोगों ने WhatsApp के अलावा कुछ यूज ही नहीं किया है. इंस्टा भी यूज करते हो. चलो, आई एम मिस्टेकन. Okay, so this is the simplest way to remember. Although I'm not a mnemonic fan, but yeah, the simplest way to remember the functions of the placenta. Now, what does it stands for? The very first thing, the placenta will be involved in the waste excretion part. Okay, waste excretion, the uric acid and the urea, everything will go through the placenta. Second is the hormone production. Second is the hormone production. Hormone production, and remember especially the progesterone part. Okay, progesterone. Okay, basically it helps to maintain the pregnancy. Okay, it is by the end of the 4 month it is secreting progesterone. Secondly, it is also the estrogen. Okay, basically to promote the uterine growth, the mammary gland development. And one more thing that you can remember, it is like the HCG, human chorionic gonadotropin. Okay, A basically stands for the air, or air I can say the gaseous exchange. The gaseous exchange. Okay. T stands for the transport of nutrients. Transport of nutrients. And 1T stands for transmission of maternal antibodies. Transmission of maternal antibodies.
Okay. For example, like immunoglobulin G, alpha globulin. Okay. So it goes through the placental membrane and provides secondary immunity to the fetus. Okay. Like, okay. And S stands for the functions. Storage functions. And basically, what does it stores? It stores glycogen, okay, calcium, and iron. Later on, these functions are taken by the liver, right? Later, the storage function is taken by the liver. Once the liver is developed, later these functions are taken up by liver. Functions are taken up by liver. I hope the functions of the placenta are clear to everyone, right? The functions of the placenta are clear to everyone. So yeah, I've not discussed the pathologies of the placenta that I will now not discuss right now. So that, yeah, again, I'll discuss it later. So yes, placental membrane, the placental formation, okay, the functions of the placenta. Yes, the fate of chorionic villi, the decidua, the lateral plate mesoderm, the axial plate somites, mesoderm, the transverse section from the level of the notochord, remnants of the notochord, the third week where every definitive germ layer is formed. I hope it is clear to each one of you guys. Just give me a thumbs up that. See, it will develop, Anushka, from the fetus only. Okay, the blood vessels will develop and they will just come into this extra embryonic mesoderm, right? Yeah. So fun mode, Karima, Angel, Aditya. I hope the lecture is clear to each and every one. So yes, tomorrow, guys, I will be starting with the gastrointestinal system, in which I will discussing the embryology of GIT first. कि stomach कैसे बना, sir, liver कैसे बना, pancreas कैसे बना, उन वो पढ़ेंगे. Again, I will discuss the clinical correlation, that is embryology with surgery, okay, and the management also. So tomorrow's lecture, where I'm starting with the GIT, very very important for you people to understand, like to attend the class, so that स्टार्टिंग के लेक्चर्स कभी भी मिस नहीं करना, नहीं तो बीच में कुछ समझ में नहीं आता. ठीक है, so let's tomorrow start at 10:30. Okay guys, goodbye, and like thank you for your patience for listening me out for so long without break actually. Chal, thank you, everyone. Thank you.